welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna do a DIY of a home decor which I try and I think I try my best. So hope you all like my DIY. Don't forget to subscribe my channel and also comment me you like it or not. और अगर आप भी try करते हो तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे Instagram पे DM करना और पिक भेजना कि अगर आपने ट्राई किया है. थैंक यू सो मच. सो विदाउट एनी देरी लेट्स स्टार्ट. So you have to take 4 sheets of 2 different colors. Now cut the sheets in square shape. Now fold it 3 times in triangular shape. So now you have to draw 3 on your triangles as you can see like that and cut the shape. So be careful when you are cutting this shape. You have to cut it from the open side. So guys take care of it when you are cutting. So आपको वो क्लोज साइड से कॉर्नर से पकड़ना है और उसके ऊपर से कटिंग करनी है ओपन साइड से. And when you open you got a flowers. So guys I cut the dark blue color smaller than the light blue. Now you have to paste the dark blue flower on light blue flower. So you get this beautiful combination of blue colors. I hope you like the combination. So I take a cutout of moon shaped cardboard. If you want to another something different, so I have a good idea for you. You can take your first letter of your name. So you will get a really cool room decor for your room. So guys you can choose any combination of colors. I think मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव आप होगे तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि आप और क्या क्रिएटिव कर सकते हो. तो please do it and send me on Instagram when you done it. I want to see your creativity. So now I take these stickers in the shape of star. You can take any shape. You can easily buy these stickers from market and any stationery shop. Now you have to take some white papers and roll it like this. You have to make I think 8 rolls like this. I found a easy way. You can use a refill and roll it so you can easily fold it and paste it and take out of your refill. So we are completed with our paper rolls. So we got 8 rolls and now you have to paste it like a check. Now cut the papers like that, 6 light blue and 6 dark blue. So guys you have to cut the dark blue shades smaller than the light blue and fold it and you can get this type of DIYs and hang with a thread or anything and paste it with your glue gun. Here we go, we are done. So हमारा DIY पूरी तरीके से रेडी हो चुका है. लेट्स सी. फाइनली हमारा DIY तैयार हो चुका है. ये बनके ऐसा लगता है और ये रूम में लगा के सच में बहुत अच्छा लगता है. रूम बहुत कलरफुल सा लगता है. आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं बट लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. बाकी मेरे को ये अच्छा लगा था तो और आपकी मर्जी है. मेरे को तो ये रूम में लगा के बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं कहाँ लगाऊंगी किधर लगाऊंगी. सो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये DIY आप अपने रूम के लिए भी. आपका रूम भी बहुत कलरफुल लगेगा और ऑफकोर्स अपने रूम को कौन डेकोर नहीं करना चाहता एग्जैक्टली. तो ज़रूर मेरी वीडियो को ये लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा. आप ट्राई करोगे. आप कोई कलर न्यू कलर कॉम्बिनेशन मुझे बताओ. मैं भी ट्राई करूँगी. सो ज़रूर ट्राई करना और अगर कोई ट्राई करे तो मुझे इंस्टा पे DM करना, फोटो भेजना उसका कि आपने बनाया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.